Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, as we are doing chapter mean median mode, so again today we are going to discuss few numericals related to mean median mode. Okay, and today, sorry, only mean. This time we are doing only mean, na? So we will solve numericals on mean using step deviation method. Okay, later from the next video we will start about median, right? So as in the live class also we have discussed about the mean using shortcut step deviation method. So there are few doubts, so again I am making this video for that. So I will show you first of all one question we have to read, as well as in this question missing frequency is also given. So using this video I will explain how to calculate missing frequency also, beta. Okay, see beta, question is given the height of a group of how much students? 67.5 students, right? Now question is saying find the missing frequency of the following data: height, obtain the median and height of the students. दो चीज़ें बोली गई हैं in this question. We have to calculate missing frequency of the following data as well as obtain height of the students. ठीक है, so see, first of all what is given here: height of the average students of 62 रेंज स्टूडेंट्स जिनकी हाइट है मीन्स 60 इंच से लेकर के 62 इंच तक, दैट आर बेटा 5 स्टूडेंट्स, राइट? आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ फ्रॉम 63 इंच से लेकर के जिनकी हुज हाइट इज 65 इंच. How much? 65 inch. They are 18 students. How many? They are 18 students, beta. How much? 18. And after that the students whose height is 60 to 68, 66 to 68, beta. In this frequency is not given, so this is problem here. So let it as x, and then after that the students from 69 to 71, these frequencies are also not given, right? After that from 70 to 73, 72 to 74, the frequencies of 8 students. Okay, so total will be 100. अभी कह रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल द सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी विल बी 100. तो मीन्स 100 का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स 5 प्लस लेट इट एज x एंड इट एज y, बेटा. ठीक है, तो 5 प्लस 18 प्लस x प्लस y प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. इट विल बी 100, बेटा. Now main thing is that we have to calculate the mean this x and y. So we will use step deviation method to solve this entire question. So our concept related to step deviation method will also be clear. Okay, so see, first of all what we have to do, we have to make a table, right? In this table we have to make a column of height in inches. Now series is already in order, so from 60 to 62, right? So write it on your notebook, 60 to 62. After that next column is 63 to 65, write it here. Now write 66 to 68. Okay, then write 69 to 71, right? After this write 72 to 74. Series is in this way, na, entire this thing. Okay, I have written here. Now number of students are also given in the question, so in the same way the number from 60 to 62 students were 5 students. So in the front of this
we have to write 5. This is its frequency. Then from 63 to 65 there were 18 students, so write it 18. And from 66 to 68 it is not given, so better let it as x. After that 69 to 71, this is also not given, so write it as y. Now from 72 to 74 these are 8. तो एज ऑलरेडी टोल्ड यू, इन सबका जो सम है 31 प्लस जो भी गिवन वैल्यू उनका सम 31 प्लस x एंड y विल बी 100 बेटा. हाउ मच? इट विल बी 100. ओके, सो इतना आप करते रहिए. अभी पहले इतना कर लिया, नाउ नोट कर लीजिए इसको, नोट डाउन दिस थिंग. आफ्टर दिस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. What you have to do now, we have to calculate beta midpoint. What? Midpoint beta. So to calculate midpoint, as I already told you, we midpoint equal to क्या होता है? Midpoint equal L1 plus L2 upon 2 beta. So on the first term it is 60 plus 62 upon 2, so it will be 121 upon 2, so it will be 61. Okay, so on the first column side I have written here 61, and on the second 63 plus 65 upon 2, so it will be 148 upon 2, 7 ja 14, sorry 6 2 is 12, 6 2 6 12 and 2 4 is 8, so it will be 64. Now see, third term is 66 to 68, so a L1 66 plus 68 upon 2, 8 6 14, 134 upon 2, so it will be 67. After that 69 plus 71, 140 upon 2, it will be 70, and after that 146, so it will be 73 beta. Okay, so this way I have got it here midpoint. Okay, now we are solving this question using step deviation method, so we have to calculate d dash. तो एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा वे हम लोगों को डी डैश कैसे कैलकुलेट करना होता है बेटा. सो डी डैश इज इक्वल टू बेटा होता है वॉट एवर वैल्यू ऑफ डी वी हैव गॉट इट. ठीक है, अब डी की वैल्यू कैसे आएगी? दिस कॉलम इज मिसिंग हेयर. सो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं सारी वैल्यूज लिख दूंगा. सो टू कैलकुलेट डी बेटा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द सीरीज, यानी कि जो भी मिड वैल्यू आई है उससे हमें माइनस करनी होगी. तो लेट इट 67 एज एज्यूम्ड, मीन इसके आगे देखो मैंने ए लिख रखा है ना 67, सो लेट इट एज एज्यूम्ड मीन. ओके, 61 से 67 से 61 जाएगा, इट विल बी -6, 64 इट विल बी -3, इट विल बी 0, इट विल बी 3 एंड इट विल बी +6. ओके, नाउ इज इट क्लियर किस तरह से डी आया है? These are the values of D. So please note down this. नोट कर लीजिए. नाउ डी डैश में क्या होगा? कोई भी कॉमन यूनिट जो सारे नंबर्स को डिवाइड करोगे, दैट इज विल बी बेटा 3. 3 से 6 भी कट रहा है, 3 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, 3 अगेन इट इज डिवाइडेड. सो डी डैश इक्वल डी डैश अपॉन आई. आई का मतलब होता है कॉमन नंबर. ओके, सो हेयर वी हैव टू नाउ कैलकुलेट डी बेटा. तो डी में क्या होगा? आपका जो भी डी आया है डी डैश में, डी डैश इक्वल डी अपॉन 3 हमने बताया ना. फर्स्ट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डी विल बी 6 माइनस का -6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2. देन आफ्टर दैट -3 अपॉन 3, इट विल बी -1, देन 0. ठीक है, फिर लास्ट में देखिए माइनस का 2 आएगा, 6 sorry, and it also will be of plus, so 3 2 just 6, so it will be 2.
सो दिस वे आई हैव गॉट इट हेयर डी डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, डी डैश मिल गया। सो प्लीज़ नोट डाउन टिल हेयर। Whatever I have explained till this column, so note down this. I have given you 1 minute, okay? And till here, if anybody have a problem, so write this problem in the comment section. Noted? Okay. Now as I already explained in the live class कि after calculating d dash we have to calculate f d dash। तो for f d dash क्या करना होता है हम लोगों को, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी d डैश से मल्टीप्लाई कर देनी है। सो फ्रीक्वेंसी इज़ दिस एंड d डैश इज़ दिस, तो इन दो कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट कॉलम से होगी 5 टू द -10, after 18 1 ja 18 minus 18, x is 0, here is 0, so it will be 0. After that y and here 1, so y will be here. After that 8 multiply by d dash 2, so it will be 16. So f d dash here we have got it, that is -12 plus y, -12 plus y. Beta, is it clear? Till here it is clear, so please note down this d dash. Now देखो what we have to do, we have to make a one equation that in the frequency series the sum of remaining number like this 5 18 8 will be 31 and x plus y is equals to 100। the total frequency का sum 100 है ना, तो 100 तो x plus y 69 हो गया। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू यूज दिस फार्मूला x बार इक्वल a प्लस सिग्मा f d dash upon sigma f beta, right? So here I have chosen next another color. So a, the value of a was 67 plus sigma f d dash value was -12 plus y upon n, तो n1 was x plus y equal 100, okay। Note down this thing. Now whenever we have solved this thing, x 31 plus x plus y, so it will be x plus y equal 6900, okay beta। now using formula what we have to do, a की वैल्यू जो आई थी एज्यूम्ड मीन की 67.45 वो रख देनी है, ओके सॉरी 67 आई है वी हैव लेट, एंड 67.45 वाज द वैल्यू ऑफ मीन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जो टॉप पे लिखी हुई थी। एंड एस वैल्यू इज 67 प्लस -12 plus y, this one upon 100 into 3, okay। so after all calculation we will get the value of x is equal 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 बेटा आ जाएगा, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाउ दिस 42 केम बेटा, एनीबडी वांट टू आस्क किस तरह से ये 42 आया है? anyone? see beta, whenever we will put at the place of a as 67.45 इक्वल, ये वैल्यू मीन की निकाल के दे दी गई थी ना, 67 minus 12 plus y upon 100, तो 6700 minus 12 plus 7 equal 67.45, okay। so whenever we will multiply by 100 it will be 6754
Okay, after contributing we will get the missing frequency as 42 and 27. Okay, now see the next part, that is also similar. Height is given, number of students is given, cumulative frequency we have calculated. Now question is saying calculate mean, median. Okay, might be, so there is a number of formulas which we can use here. Okay, so here we will use median equal to L plus n upon 2 minus CF. Okay, so this way we will get median equal to 67.45. okay, now median of the students is 67.43 inches, and this means that 50% of the students of height good class are taller than 67.45. okay, ये मान लिया गया कि इतने बच्चों की हाइट 67.45 की रेंज में है और इतने बच्चों की नहीं है. ठीक है, सो वी हैव टू डिवाइड इट इक्वली. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल फाइंड एवरेज वैल्यू फर्स्ट. ओके, now see, very interesting one question I have added here with the help of PPT. It is saying find the median. Okay, and here numbers are attached, right, like mean, median, mode. So digits are 9, 10, 10, 13, 13. Okay, so what will be the mean? Mean means average number. What you will do, you will sum up all these 10, 10, 20 plus 13, 13, 26 plus 9, so it will be 55. 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दोगे तो x mean is equal to 55 upon 5, so mean will be 11. okay, mean means median number, so median number will be 10. Mode highest recurring number, both are equal, 9, 13 and 10. okay, is it clear? Any problem? No problem. Very good. Next, see, here I have written answers of all the questions whatever I have asked there. That mean is equal 11, median equal 10 and mode equal 10 and 13, means both the numbers are coming equal na, that is why mean will be similar. okay, is there any problem now? Anybody have mean, median, mode में कैसे क्या करना है? I think it is cleared very clearly and I have explained it well. okay, now you have to prepare notes, right? Now question is saying find the mean, median, mode and range. Basically we will solve mean and only. ठीक है, तो ये सीरीज दे रखी है. मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट मीन वी विल सम अप ऑल दी नंबर्स. ठीक है, इन सारे नंबर्स का सम कर देंगे. चेक हाउ मच सम इज कमिंग. ठीक है, जो भी आएगा आप उसको n से डिवाइड कर देंगे, देयर विल बी मीन. और जो नंबर बार बार सबसे ज़्यादा आ रहा हो, लाइक वाइज 82 इज कमिंग, 82, 79, 74, 60, 48. So to calculate mean we have to sum up all this the numbers. ये सारे numbers को add करेंगे, then after that only we will get mean. And median number, arrange it in ascending order and find the median number. okay, that will be median. mode highest recurring number. highest recurring number कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 30 never, 82 never, 79 never, 54 never, 60 never. So what will be the similarly highest number will be the highest range. ठीक है, now check. mean is 56, median is 57. On mode there is no effect. Why no effect? Range is 69 because
Mean we have calculated by dividing number, and median we will have calculated on the basis of the series, and median we have compared any number is not repeating again and again. That is why median mode will be same as no mode. Okay. So thank you students. Bye bye. Take care. Watch videos upcoming regularly.